Hello guys, welcome to my channel Elegance with Enchantress. I am Priya. Today's topic is how to create a fully nude makeup look in 10 steps. So let's start. The first thing is toner. So here I am using Earth's Goodness toner. It helps us to make our skin gently refresh, and toner also आपके स्किन में नेचुरल मॉइस्चर स्टोर करने में भी हेल्प करेगा. Which people have dry skin, toner is must for you guys. अच्छे से मैं इसे पूरे फेस में अप्लाई कर लूँगी. एंड अनदर थिंग इज़ आप लोग टोनर को एज अ क्लेंसर भी यूज़ कर सकते हो. टोनर यूज़ करने के बाद आप आपके फेस को 2 मिनट के लिए छोड़ दें. नाउ स्टेप 2 इज़ एसेंशियल ऑयल. अगर आप में से किसी को फाउंडेशन अप्लाई के बाद ऑक्सीडेशन का प्रॉब्लम आता है तो आप ज़रूर ये अप्लाई करना ना भूलें. I'm using a small amount. Evenly spread it all over your face. एसेंशियल ऑयल अप्लाई करने के बाद आपका स्किन बहुत ही ग्लोई और हेल्दी दिखेगा. नाउ योर स्किन इज रेडी फॉर फाउंडेशन. स्टेप 3 इज प्राइमर. प्राइमर कम इन सिल्की क्रीम एंड जेल फॉर्म. Primer fills in the pores, blemishes, and gives smoothness to the skin. प्राइमर मेकअप का बेस होता है. सो फ्रेंड्स, मेकअप अप्लाई के पहले प्राइमर को यूज़ करना बिल्कुल भी स्किप ना करें, वरना आपका पूरा मेकअप बहुत ज़्यादा पैची या फिर केकी लुक देगा जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा. I am using Fit Me Matte Liquid Foundation. The shade is 123. So guys, use a small amount. फाउंडेशन डॉट डॉट करके अप्लाई करें. एकदम से एक जगह पे बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, वरना ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है. बहुत ज़्यादा फाउंडेशन बिल्कुल भी यूज़ ना करें. आपका मेकअप कितना अच्छा दिखेगा ये आप कितना ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं इस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है. आपका मेकअप कैसा दिखेगा ये आपका प्रोडक्ट और आप कैसे ब्लेंड कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है. फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लें. अच्छे से ब्लेंड कर ले फाउंडेशन को. फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करें एक अच्छा कवरेज पाने के लिए. कैन सी कि कितना अच्छा कवरेज आया है हमारा. Now it's time to apply some compact. I am using here Lakme Radiance Compact to set my foundation like this. हल्के हाथों से कॉम्पैक्ट को यूज़ करें, बहुत ज़्यादा दबाकर या ज़ोर से ना करें. इसके बाद मैं अपने लिप्स में एलोवेरा जेल अप्लाई करूँगी.
क्योंकि ये न्यूड लुक है, सो न्यूड लिपस्टिक इज़ मस्ट। मैट लिपस्टिक यूज़ करने से पहले आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करके रखें। लिप्स मॉइस्चराइज हो रहा है, तब तक मैं आईलाइनर अप्लाई करूँगी। अब इसे हम ड्राई होने देंगे। नाउ इट्स लिपस्टिक टाइम। सो गाइस, हमें बिल्कुल भी मैट लिपस्टिक डायरेक्ट लिप्स में अप्लाई नहीं करना है, उससे पहले लिप्स को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस, मैंने पहले ही एलोवेरा जेल अप्लाई कर लिया था। आप लोग चाहे तो लिप बाम या फिर कुछ और भी क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट लिप्स में अप्लाई कर सकते हैं। Step 8 is contour. It's like a game of shadows. Now blend it like this. जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मेकअप में ब्लेंडिंग ही मेन चीज़ है, तो आपको ख्याल रखना है आप ठीक से ब्लेंड कर रहे हैं या नहीं। तो मैंने यहाँ पे ठीक से ब्लेंड कर लिया है, आप देख सकते हैं। Now I am applying white kajal. Because it's nude makeup look, so मैं यहाँ ब्लैक काजल अवॉइड करूँगी। वाइट काजल अप्लाई करने से आपके आईज थोड़ा बड़ा लगेगा दिखने में, एंड ये आपके न्यूड मेकअप लुक में बहुत ज़्यादा फ्रेश वाइब भी देगा। स्टेप 9 इज़ कॉन्सीलर। अगर आपके फेस में बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स, एक्ने का प्रॉब्लम है, अगर आपके अंडर आइज एरिया डैमेज है या फिर डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है, तो आप कॉन्सीलर को फाउंडेशन के बाद यूज़ करें। मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स नहीं है एंड आई हैव नो डार्क सर्कल्स, तो मैं लास्ट में ही अप्लाई कर रही हूँ कॉन्सीलर। ये न्यूड मेकअप लुक है, तो आप इसमें जितना हो सके कम प्रोडक्ट यूज़ करें, आपको नेचुरली ब्यूटीफुल दिखना है। ब्लेंड योर कॉन्सीलर प्रॉपरली। At last, loose powder to set my whole makeup look. गाइस, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। So it's my final look. You guys can see how flawless my skin is looking. Like, share, comment and subscribe my channel.